Hello everyone, my name is Manish Kumar and you're watching Software Circle. As in my last video, I described about how MVC architecture works, how the whole MVC flow uh, goes through different stages and it brings the web page to our web browser. Today I will just create a simple MVC application in ASP.NET Core for printing Hello World. And this is the project where uh, in this project itself, we will keep on building in series of different videos. We will be completing from end-to-end e-commerce website. So we will create a complete end-to-end e-commerce website in ASP.NET Core. Okay, so let's go on. This is the Visual Studio 2019. Just clicking on project. Here I will select a web application model view controller. Next, just software e software e-commerce. Okay, 3.1, that is okay. Now see, okay, file directory with the same name already exists. Try to make some changes there. Right, circle, e-commerce. Okay. Okay. So this got created, and you may see the whole application is created with their default uh, layout or could say default template. If go in view here, it is the layout default. So first, we'll just go to the UI first. We'll just say, okay, or we can directly click on a file. It's building the project and it will show us the application in the web page. This is building. This is the page. So here it is. Software Circle e-commerce. So welcome. So this is the default template. It comes with the default template that is available with MVC. So we print a simple hello world program. So we will today create a simple hello world program with this. Okay. So see the when you see that here, welcome, we'll try to change this hello world. If we see what it does, so even if we don't do something, it's home slash index. By default, it leads to this home slash index only. That is that is only because of routing, which I had already explained in my last video. So we'll go to home index to see welcome. Just say welcome, Alex. Hello, world. Save it. Again, rebuild it, open it. Page is opening here. If you open again, welcome, Alex. Ah, my bad, spelling wrong. Okay. Okay. So anyway, अभी ये इंडेक्स पेज ओपन हो रहा है और ये लेआउट पेज है लेआउट हियर अभी जो क्या रेंडर बॉडी तो अभी इसके ऊपर का जितना है और दिस इज द हेडर पार्ट you see you can do written here then here this is the part of footer okay this is the header this is the footer ठीक है और रेंडर बॉडी में जो भी
जिस भी पेज के लिए हम ये यूज करेंगे ये लेआउट, ये हेडर और फुटर को रेप्लिकेट करेगा उस पेज में, और इन बिटवीन दिस हेडर एंड फुटर जो भी पेज हम ओपन करेंगे वो इसके अंदर ओपन होगा। दिस इज हाउ इट वर्क, द लेआउट पेज वर्क दिस वे। और क्योंकि हेडर एंड फुटर हम मोस्टली सारे पेजेस में रिपीट ही करते हैं इसलिए, ठीक है। ओके, और मैं ये रहा हेलो। तो जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था हाउ इट वर्क। सो यहाँ पे इंडेक्स पेज, यहाँ पे अगर कोई भी व्यू हम मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये व्यू का ही नाम ले, जो भी एक्शन मेथड का नाम ही से ही ये व्यू सर्च करेगा। तो व्यू हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल, इसलिए यहाँ से मिलेगा। ओके, एंड स्टार्टअप एंड प्रोग्राम डॉट सी एस। ओके, तो ये जैसा कि ये स्टार्टअप में हमारे पास वो राउटिंग रहता है, राउटिंग और राउटिंग टेबल से मैच करता है। बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट पैटर्न हमारे पास ये होम है और एक्शन नेम इज इंडेक्स, इसलिए वो डायरेक्ट होम और इंडेक्स पेज पे ये जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Okay guys, this is how we can use the uh, default template of this, MVC which is uh, available with the template provided by Microsoft, and this is the foundation of our complete website. And now on, so I will push this application in Git also, and share you the Git link where you can download or work out the code, and you can also try it out. So every changes with every video will go in this project only. Okay, thank you.